Dear students, this is Imran Kazmi and here is your lecture 8 of Programming Fundamental. Hopefully you have been following the previous lectures, and if you have any query regarding the previous lectures, you may send it to me via Google Classes or WhatsApp. And do not hesitate to contact me if you need any help or problem, rather than simply ask your question and I'll reply accordingly. In the previous lecture, we have been working on for loop. In this lecture, we will work on for loop in detail. We'll do some programming practices using for loop. We'll cover do while loop, and we will discuss some of the difference in for loop and while loop and do while loop. And we will do some programming practices using do while loop, and finally we will discuss nested loop in this lecture. So these are some of the topics we will discuss in this lecture. Hopefully you will understand them. First of all, let's discuss some of the assignments which I have given to you in the previous lecture. That write down the program to calculate the factorial of any number n using for loop. We have done this program using while loop, and now we are going to do this using for loop. So there is no difference except the syntax. The syntax of for loop and while loop is different. Otherwise, the sequence and the purpose method of both the loop is almost same. So please focus on the syntax of the for loop. As we have stated that in for loop, we simply start from the initial point, initial value, then condition, and then increment or decrement. We write simply 3 steps in a single line, rather than or at different places 3 parts of the loops are placed in a single line in for loop: initial value, condition, increment or decrement depending upon the logic. So as we have done this program using while loop, we started it in decreasing order. From the number up to 1, we calculate the factorial. So similarly, we will start this loop. Initially we will start it from the value n, as n is the number that we have input to calculate the factorial of any number. So n is the variable that contain the value of for which we are going to calculate factorial. तो as I said, n को आपने input करना है, n वो number है जिसका factorial find करना है, and we will start it from that number n, and we'll go up to 1. Until this condition is true, we would continue decreasing this number by 1. As I have told you, the decrement operator minus minus is used to decrease the value of variable by 1. So we will start it from n, we will go up to 1 using decrement of 1. So x will start from the number, and the number is n. N is the number for which we want to calculate the factorial. Let's say the value of n is 5. So the loop will start from 5. It will go up to 1 with 1 decrement. So the value of x will start from 5, then 1 decrement, it will become 4, then 3, then 2, then 1, up to 1. This condition is true, and when the value of x becomes 0, this condition will become false, and the control will come out of the body of the loop. So this loop would continue until the value of x is greater than equal to 1, and the value of x simply start from the value of n that user will input to calculate the factorial of the number.
So, for example, we have entered 5, the loop will start from 5, the condition is true, and control come inside the body of the loop where f equal to f multiplied by x. That means that value of f is initially 1, 1 multiplied by 5, value of f would be 5, then second time the value of x is 4, f is 5, 5 multiplied by 4, the new value of f will be 20, then 20 multiplied by 3 as the value of x will decrease by 1, so 20 multiplied by 3 the value of f will become 60, then 60 multiplied by 2 the value of f will become 120, and then 120 multiplied by 1 the value of f will finally become 120. So after that the value of x becomes 0, and for 0 this condition becomes false, and when this condition gets false, control would not enter into the body of the loop, rather control would go to the next statement after the loop, and the next statement is simply output instruction that display the value of f. The value of f is at the end of the loop, the value of f is 120 when x is n. So in this way the factorial of n is calculated and the factorial of n is 120. So in this way we use for loop. Simple difference is that three parts of the loops are placed in a single line: initial value, condition, and decrement. We have another program, table of n. We have done this using while loop. Now we are going to do this using for loop. Again the statements are same except the syntax. The syntax is different, and in for loop, as I have already told you, the three parts of the loop are placed in a single line: initial value, condition, and increment or decrement. So for table we will start it from 1, we will go up to 10 and with 1 increment. The value of x would vary from 1 to 10 with 1 increment. First time n multiplied by x mean n is the number for which you want to print table. Let's say the value of n is 5. 5 multiplied by 1, the value of t will be 5. 5 multiplied by 1 equal to 5. Then the value of x becomes 2. 5 multiplied by 2, the value of t will be 10. 5 multiplied by 2 equal to 10. Then the value of x would become 3 due to this increment. So 5 multiplied by 3, the value of t would become 15. 5 multiplied by 3 equal to 15. In this way this loop would goes on up to the value of 10 for value of x, and when the value of x becomes 11, this condition gets false and control would not enter into the body of the loop, rather we would go up to get ch. So in this way for loop work. The working is almost similar, only the syntax is different. So either you are using C++ or Java. For loop work same in both languages. I have done these programs same in Java. For your if you are using Java, you can do it similarly. No difference in C++ or Java. For and while are working in the same way as in C++ or in Java. So here is these programs using Java. आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैंने वही काम किया. ये आपका प्रोग्राम है फैक्टोरियल वाला. लूप को n से स्टार्ट किया, 1 तक गए, 1 के डिक्रीमेंट के साथ. उसी तरीके से इस पार्ट पे फोकस करें आप, तो फॉर लूप आपकी जैसे C++ में प्लेस होती है एज इट इज़ आपने उसको जावा में भी प्लेस किया. सिंटैक्स का कोई डिफरेंस नहीं है. आपने सेम उसको जैसे C++ में अप्लाई किया है ऐसे ही आप उसे जावा में भी अप्लाई करेंगे. इसमें कोई डिफरेंस नहीं. आप जावा में भी उसकी कोडिंग जो है इसी प्रोग्राम की चेक कर सकते हैं. आप लोगों के लिए जो लोग जावा को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मैंने जावा में कोडिंग कर दी. दूसरा प्रोग्राम
which we have done in C++, that was write down the program to print the table of any number n using for loop. अब वही चीज़ जो है वो मैंने जावा में भी की है, इसमें भी आप चेक कर लें. सिर्फ आपका सी आउट स्टेटमेंट की जगह पे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आ गया. बाकी फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो एग्जैक्टली सेम है जो आपने सी प्लस प्लस में किया है, जैसे इनिशियल वैल्यू, कंडीशन, इंक्रीमेंट. तो जैसे आप इसे जो है वो सी प्लस प्लस में अप्लाई करेंगे, सिमिलरली यू विल अप्लाई दिस इन जावा. देयर इज नो डिफरेंस ऑफ सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप और व्हाइल लूप, so you will apply in the same manners. Only the some specific statement syntax is different, otherwise loop syntax, if conditions are the same in C++ as in Java, you can apply in the same way. The third type of loop, do while loop. Do while loop execute one or more time. One or more time mean do while loop execute statements at least once. The minimum cycle of do while loop is one time, and it may be more times, but minimum cycle is one time. But in for loop or while loop, the minimum cycle may not be there, and the loop may not be executed. So over here in do while loop would execute its statement at least one, even if the condition is false. So the cycle is as one or more time mean at least one time it will execute its statements. The syntax of do while loop, check the simple syntax. Do, body of the loop started, then statements, body of the loop close, then while, condition, and semicolon. Over here semicolon is placed, while in while loop we do not place semicolon after the condition, but in do while loop we place semicolon after the condition. So keep it in mind, this is compulsory over here. This has not been written mistakenly, you have to write it. So do, body of the loop, while, and condition. First time the control enter the body of the loop, execute the statements, then check the condition. If the condition is true, then again control transfer to do, and again statements are executed, and then condition is checked. If it is again true, then control again transfer to do step and enter into the body of the loop. So जब तक ये condition true रहेगी, control do पे transfer होता रहेगा और statements execute होती रहेंगी. और जब ये condition false हो जाएगी तो control do पे वापस नहीं जाएगा, बल्कि इससे आगे next statements execute करेगा. तो simply याद रखें कि जब फर्स्ट टाइम कंट्रोल डू की बॉडी में एंटर होता है तो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके आके वाइल की कंडीशन को चेक करता है. जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है स्टेटमेंट्स रिपीट होती रहती हैं, लेकिन इवन फर्स्ट टाइम जो हमने यहाँ पे बात डिस्कस की कि वन और मोर टाइम, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, because it is going to check the condition at the end of the body of the loop. So at least one time these statements must be executed, because after executing these statement control come to the condition. So keep it in mind, there is a little bit difference. After execution of statements condition is checked. So as I have stated earlier, first statement inside the body is executed, then condition is checked. If the condition is true, again body of the loop is executed, and this process continue until the condition becomes false. Unlike while loop, semicolon is placed at the end of the while. You can check like this. This semicolon is different from while loop. Do while loop में semicolon place होगा, जबकि while loop में semicolon यहाँ पे condition के बाद apply नहीं होता.
डू वाइल लूप में सेमी कॉलन जो है वो यहाँ पे आएगा. दीज आर द वर्ड्स दैट हैज बीन रिटन ओवर हेयर. So let's discuss a little bit difference between while loop and do while loop. There is a minor difference between while and do while loop. While loop tests the condition before execution any of the statement of the loop, whereas do while loop tests conditions after having executed the statement at least within the loop. So you can check it. In while loop, simple condition is checked before execution of the statements, and if the condition is false, even first time the condition is false, the statements are not executed. But in do while loop आप ये चीज़ देख सकते हैं कि we start from do, the statements are executed and then condition is checked. So while loop में और for loop में clear cut difference आप ये ध्यान में रखें कि while loop में condition पहले check होती है और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी. लेकिन डू वाइल लूप में कंडीशन चूंकि बाद में चेक हो रही है, तो बाद में अगर कंडीशन चेक होती है तो इसका मतलब यह है कि अगर ये स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट करके आएगा तो कंडीशन चेक करेगा. सो अगर बाद में कंडीशन चेक हो रही है तो इसका मतलब यह है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो गई है तो वो स्टेटमेंट्स तो चूंकि एग्जीक्यूट कर चुका हुआ है, तो इससे ये बात क्लियर होती है कि डू वाइल लूप में और वाइल लूप में क्लियर कट जो डिफरेंस है वो ये है कि डू वाइल लूप एट लीस्ट वन टाइम जरूर एग्जीक्यूट होती है इवन दो द कंडीशन इज फॉल्स. लेकिन वाइल लूप में अगर आपकी कंडीशन पहले ही फॉल्स हो जाती है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती, उसकी स्टेटमेंट एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होती. लेकिन डू वाइल लूप एट लीस्ट एक दफ़ा स्टेटमेंट ज़रूर एग्जीक्यूट करेगा चाहे कंडीशन फॉल्स भी हो जाएगी. If initial condition is false, while loop would not execute its statement. On the other hand, do while loop execute its statement at least once even if the condition fails for first time. ये वही बात रिपीट कर रहे हैं कि अगर पहली दफ़ा भी स्टेटमेंट्स जो है वो आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो डू वाइल लूप में एक दफ़ा ज़रूर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी चाहे पहली दफ़ा ही कंडीशन फॉल्स क्यों नहीं है. जबकि वाइल लूप में ऐसा नहीं होता. वाइल लूप में आपकी कंडीशन अगर शुरू में फॉल्स है तो स्टेटमेंट एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट नहीं होंगी. इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि डू वाइल लूप को वहाँ पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पे हमें उसको एट लीस्ट एक दफ़ा जो है वो चलाने की ज़रूरत हो. अगर लूप की ये ज़रूरत है कि वो एक दफ़ा ज़रूर चले तो वहाँ पे हम वाइल लूप की जगह पे डू वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डू वाइल लूप एक दफ़ा ज़रूर चलती है चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो. डू वाइल लूप यूज रेयरली व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट अ लूप एट लीस्ट वंस. इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत कम है क्योंकि इसको हम सिर्फ वहीं पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे उसे एट लीस्ट एक दफ़ा जो है वो स्टेटमेंट को ज़रूर चलना होता है. और नेक्स्ट टॉपिक nested loop. When a loop written inside the body of another loop, then it is known as nesting of loop. Any type of loop can be nested in any type such as while, do while or for. Nesting loop is nothing more than a loop, but there is a little difference that if the loop is coming within another loop then the loops become nested. एक लूप में जब आप एक और लूप लगा देंगे, एक लूप की बॉडी में जब आप एक और लूप नेस्ट कर देंगे, प्लेस कर देंगे, तो दोनों लूप्स आपकी क्या कहलाएंगी? नेस्टेड लूप्स कहलाएंगी. द इनर लूप एंड द आउटर लूप. आउटर लूप मीन अगर आपकी एक लूप है उसके अंदर आपने एक और लूप लगाई है तो the inner loop would be called its nested loop. Let's have an example. Over here we have two loops
First loop is placed using variable I, and the second loop is placed using j. This is called outer loop, and this one is called inner loop. Outer loop and inner loop. आउटर एक दफ़ा जब चलती है, उसका फर्स्ट साइकिल जब स्टार्ट होता है और कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है जब इनर लूप को, तो इनर अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करती है, और जब तक इनर का पूरा साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता, इनर अपना कंट्रोल कभी भी आउटर को ट्रांसफ़र नहीं करती. सो आउटर का एक साइकिल इनर के कंप्लीट साइकिल्स जो है उसको चलाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो आई की वैल्यू 1 होगी, कंट्रोल बॉडी में एंटर होगा, तो बॉडी में आगे उसे जो सेकंड लूप मिलेगी इनर लूप, ये 1 से स्टार्ट होगी और 4 तक जाएगी. सो इनर लूप जो है वो अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करेगी और 4 टाइम्स जो है वो पाकिस्तान लिखेगी अपना साइकिल कंप्लीट करने के बाद. और इसका साइकिल कंप्लीट कब होगा? व्हेन j becomes 5, because until or unless the value of j is lesser than equal to 4, the inner loop would continue. So when the value of j becomes 5, the control transfer to the outer loop, and the outer loop the value of I becomes 2. Again control enter into the body of the loop, and again control is handed over to the inner loop. Inner loop would again start from 1 to 4, so the cycle would again complete, and when the inner cycle complete, the control is transferred to the outer loop. और आउटर की वैल्यू जब 3 हो जाएगी और 3 के लिए जब वो इन होगा, तो उसके बाद इनर फिर अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करेगी, फिर ये 4 दफ़ा चलेगी और 4 दफ़ा पाकिस्तान प्रिंट करेगी, फिर आई की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. इन दिस वे आउटर आपकी जो है आउटर लूप ये 1 to 3 तक जा रही है, यानी कि आउटर के पास 3 साइकिल्स हैं, 1, 2 और 3, जबकि इनर के पास जो है वो 4 साइकिल हैं, 1, 2, 3 एंड 4. सो आउटर एक दफ़ा चलती है तो इनर 4 दफ़ा चलती है. आउटर सेकंड टर्न में आएगी तो इनर अगेन इट वुड स्टार्ट फ्रॉम 1 to 4. देन आउटर थर्ड टाइम चलेगी, इनर अगेन start from 1 to 4. So it will write Pakistan 12 times, because for each single cycle of outer loop, inner runs from 1 to 4 and print Pakistan 4 times. So for first cycle of outer loop, inner print 4 times Pakistan. For second cycle of for loop, inner print 4 times, again 4 times Pakistan. And for third cycle of outer loop, inner again print 4 times Pakistan. So totally it would print 12 times of Pakistan, क्योंकि आउटर का एक साइकिल इनर को अपना कंप्लीट साइकिल करने की इजाज़त देता है, और जब तक इनर के पास इनर का साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता वो आउटर को कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं करती. सो याद रखें कि आउटर एक दफ़ा चलती है और इनर अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करती है. आउटर दूसरी दफ़ा चलती है तो इनर फिर अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करती है. लेकिन जब आउटर की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल वुड नॉट एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द आउटर लूप, इनर वुड नॉट रन. सो आउटर इनर लूप इज डिपेंडेंट ऑन आउटर. If outer works, inner would works, but if outer does not work, inner would never works. So when the condition of the outer loop becomes false, control would not enter into the body of the loop, rather control would come out of the body of the loop of the outer loop and transfer to the next statement after the body of the loop of the outer loop. So nesting work in this way. Let's have some practices using nested loop. Nested loop में इस चीज़ का ख्याल रखें कि it is not necessarily that if you are using for loop as outer loop and you will use for loop as inner loop, ऐसा हरगिज़ नहीं है. आप आउटर फॉर यूज़ कर रहे हैं, इनर वाइल यूज़ कर सकते हैं. आउटर वाइल यूज़ कर रहे हैं तो इनर फॉर यूज़ कर सकते हैं. आउटर फॉर यूज़ कर रहे हैं तो इनर डू वाइल यूज़ हो सकती है. देयर मे बी द मिक्सचर ऑफ एनी लूप्स.
it is not compulsory that if outer is for, then inner must be for. There is no compulsion over here. If outer is for, inner may be while. If outer is while, inner may be for. Inner may be for. So in the same way, you can use do while loop. If outer is do while, inner may be for or while, and if outer is for, inner may be do while. So there is no compulsion that same loops must be there for outer and inner. You can use the mixture of loops. Here are some examples, some practices. First output you need to generate in this way: 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 and 1 2 3 4 5. चेक इट कि आप जैसे जैसे नेक्स्ट रो में आ रहे हैं आपका एक नंबर ऐड हो रहा है. अगर आप दूसरे आउटपुट पे चले जाएं तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 से. जैसे ही आप नेक्स्ट रो में आते हैं तो आपका एक नंबर कम हो जाता है एंड से. तो पहले 5 तक गए, आप दूसरी रो में 4 तक गए, फिर 3 तक और फिर 2 तक और फिर 1 तक. सीक्वेंस पे फोकस करें. थर्ड अगर आप आउटपुट की बात करें तो आप 5 4 रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं. 5 4 3 2 एंड 1. सेकेंड रो में 4 3 2 एंड 1. मीन फर्स्ट में आप 5 पे थे तो सेकेंड आपने रो 4 से स्टार्ट की. थर्ड रो आप फिर एक कम हो गए. मीन अगर आप 4 पे थे तो थर्ड रो आपने 3 से स्टार्ट की, फोर्थ रो आपने 2 से स्टार्ट की और लास्ट पे आप 1 पे पहुंच गए. तो आपने इन तीनों जो आपको आउटपुट के लिए असाइनमेंट दी जा रही है प्रैक्टिस के लिए, तो इसके सीक्वेंस पे गौर करें कि यहाँ से आप 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. और इसमें इसी तरह से आप गौर करें कि आप कमी की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे भी आप चेक करें कि आपका सीक्वेंस क्या चल रहा है. So dear students, as I have already told you, in programming, the first part of your concentration, the first thing you must consider is how to understand the problem. The problem understanding is very much important. If you do not understand the problem completely, you cannot go for the good program. So first of all, focus on the question, focus on the problem, then try to solve that problem until or unless you are not 100% sure about the problem. If you have any ambiguity, please ask or clarify the ambiguity, then try to develop the program. Before clearing without or with doubts, you must not go for the program. Rather, you must be very much clear in the beginning of your development. ओवर हेयर आप लोगों की आसानी के लिए एक पार्ट जो है, 3 और आप लोगों को मैंने असाइनमेंट्स या प्रैक्टिसेस के लिए दिए थी चीज़ें. इनमें से जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे. 5 4 3 2 1 4 3 2 1. अब इसमें देखें नेस्टेड लूप्स किस तरह से अप्लाई होंगी. दिस इज योर आउटर लूप एंड दिस इज योर इनर लूप. Outer is started from 5 going to 1 with 1 decrement. It will start from 5, it will go up to 1 with 1 decrement. So this is your outer loop, and the inner loop start from I. What does it mean? What is meant by I over here? The value of I is the value of that it will get from the outer loop. If inner loop get the value of I is 5, the inner loop will start from 5. If inner loop get the value of I 4, then inner would start from 4. And if the inner loop get the value of I from the outer loop as 3, then it will start from 3. So where it will start, it depend upon the value, current value of I. Whatever value of I will be there, the inner loop will start from that value. So when the value of I is 5, the condition is true. Control enter into the body of the loop. Here it gets the inner loop.
j equal to I, as the value of I is 5, so j will start from 5. Condition is true with one decrement. So first time the value of j is 5, then with one decrement the value of j becomes 4, then 3, then 2, and then 1. So first time when inner loop gets complete, the first row will be displayed 5, 4, 3, 2, and 1. So when the first time it is completely executed, the inner loop, the first row is there 5, 4, 3, 2, and 1. When the value of j becomes 0, the inner loop would stop working and control is transferred to the outer loop and the line is changed due to end of line. When it again goes back to the condition, the value of I would be with one decrement, the value of I would become 4, and for 4 the condition is again true, and when the control enter into the body of the loop, now the j will start from 4 because the current value of I has become 4. So 4 is greater than equal to 1. With one decrement it will work, and when this inner loop again complete, it will display 4, 3, 2, and 1, and this loop gets complete. The control again come out of the inner loop, again end of line, the line is changed, again control transfer to the outer loop and the value of I become 3, and for 3 this condition is again true. So this time j will start from 3 and will go up to 1. So this line will be displayed. Similarly, again the value of I become 2, the condition is again true, again control enter into the body of the loop. This time j start from 2 up to 1 and 2 and 1 is displayed. Then the value of I become 1, for 1 the condition is true. This time inner loop will start from 1 and goes up to 1. एक दफ़ा चलेगी आपकी inner loop last time और जस्ट 1 जो है वो डिस्प्ले करेगी. सो आउटर जो है वो आपकी 5 से स्टार्ट हो रही है तो इनर भी 5 से स्टार्ट हो रही है. जब आउटर की वैल्यू 4 हो जाती है तो इनर 4 से स्टार्ट होती है. जब आई की वैल्यू 3 हो जाती है तो इनर 3 से स्टार्ट होती है और आई की वैल्यू 2 हो जाती है तो इनर 2 से स्टार्ट होती है और ये 1 तक जाती है. इन दिस वे आपकी जो नेस्टेड लूप जो है वो काम करती है. तो इसमें मैंने आप लोगों के लिए जो तीसरा पार्ट था वो अटेम्प्ट कर दिया ये वाला. अब ये पहले दो पार्ट जो है ये आप लोगों की प्रैक्टिस है, आप लोगों ने खुद करना है. चाहे C++ में करें या जावा में करें, मेथड आपका सेम ही होगा. उसके बाद ये एक छोटी सी स्टेटमेंट हमारी रह गई थी, ब्रेक स्टेटमेंट. तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? Sometime it becomes necessary to come out of the loop even before the loop condition becomes false. There are some situations when we do not know how exactly how much specific number of time this loop will work. So when we have a situation like this कि जहाँ पे हमें ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ जाए जहाँ पे कंडीशन ट्रू भी होने के बाद फिर कोई ऐसी कंडीशन हम अप्लाई कर दें जिस पे लूप को रुक जाना चाहिए, तो अगर हम अनइवन वे से लूप को जो है वो सडन वे से जो है वो ब्रेक करना चाह रहे हैं इवन दो द कंडीशन इज ट्रू, तो हम थ्रू ब्रेक स्टेटमेंट जो है हम लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं. लूप हो या स्विच स्टेटमेंट हो, अगर ब्रेक स्टेटमेंट हम जो है वो अप्लाई कर देंगे तो आपकी लूप जो है वो वहीं से जो है वो रुक जाएगी, वहीं से जो है वो बॉडी ऑफ द लूप से बाहर आ जाएगी अगर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी. तो ब्रेक स्टेटमेंट्स अनइवन सिचुएशंस के लिए अप्लाई करते हैं जहाँ पे हम ये देख रहे हों कि अगर कंडीशन जो है वो ट्रू भी है और आप किसी सर्टन मूवमेंट पे पहुँच गए हैं तो उसके बाद आप चाह रहे हैं कि लूप आगे ना चले, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई करके लूप की बॉडी से बाहर आ सकते हैं इवन दो द कंडीशन इज ट्रू. It causes immediate exit from that loop in which it appears, and it is generally written with the condition. It is written with the keyword as break.
इसमें जब ब्रेक स्टेटमेंट आप अप्लाई करते हैं तो जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो अगर कंडीशन ट्रू भी है तो कंडीशन चेक नहीं की जाएगी, आप लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशंस इफ you apply break statement. When break statement is encountered, loop is terminated and control is transferred to the statement immediately after the loop or situation where we want to jump out of the loop instantly without waiting to get back to the condition statement. Again वही बात रिपीट हो रही है यहाँ पे कि आप जब ब्रेक स्टेटमेंट आपकी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो कंट्रोल फ़ौरन जंप करके लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा या किसी ऐसी मतलूबा जगह पे आ जाएगा जहां आप कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, और उस वक्त वो दोबारा जाके लूप की कंडीशन को चेक नहीं करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आप अप्लाई करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ब्रेक ने आपकी लूप को ब्रेक कर देना है। एक्सीडेंटल मैटर्स के लिए जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसी मखसूस कंडीशन अगर एक्सीडेंटली अराइव हो गई है और उसके बाद लूप को नहीं चलना चाहिए, तो ऐसी एक्सीडेंटल कंडीशंस के लिए जो है वो आप ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। या आप समझते हैं कि अगर आपका कोई गोल ऐसा है जो पहले अचीव हो जाए और लूप को भी उसके साइकिल्स को चलना बाकी हो, तो अगर जहाँ पे आपका गोल अचीव हो जाए और आप कहें कि जी एक स्पेसिफिक वैल्यू चूंकि अचीव हो चुकी है, आगे लूप को नहीं चलना चाहिए, तो अगर आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू अचीव करने पे लूप को रोकना है तो वहाँ पे आप ब्रेक स्टेटमेंट को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। When break is encountered inside any loop, control automatically passes to the first statement after the loop. This break statement is usually associated with if statement. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू, कोई स्पेसिफिक टारगेट, कोई स्पेसिफिक कंडीशन आप चाहते हैं कि अगर वो मीट हो जाए तो लूप आगे फर्दर ना चले, तो उसके लिए जो है वो आप इफ स्टेटमेंट के साथ ब्रेक को अप्लाई कर दें कि इफ सर्टन कंडीशन इज मीट देन ब्रेक। तो इट मीन के जी आगे फर्दर लूप नहीं चलेगी बल्कि कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।